नेक्स्ट इज हेरारिकल नेटवर्क। हेरारिकल नेटवर्क में बस वही था आपका, यहाँ भी ऑलमोस्ट रिंग की तरह होता है, डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे हायरार्की में ही होता है यहाँ भी कि फर्स्ट द लोकल एरिया इज बीइंग कवर्ड विद द लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, देन द नेक्स्ट इज बीइंग कवर्ड बाय रोड और रेलवेज और वॉट एवर, ओके, एंड द एक्सप्रेस वे। तो डिफरेंट लेवल ऑफ रोडवेज और रूट सच एज लोकल, आर्टेरियल एंड एक्सप्रेस आर बीइंग कवर्ड। इसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट ट्रैफिक एफिशिएंटली अक्रॉस लेवल्स, है ना। तो हर लेवल को जिस टाइप का ट्रैफिक रिक्वायर्ड है उस टाइप का ट्रैफिक मिलता है, एंड दस इट रिड्यूसेस द local traffic congestions, okay. However, the challenges again it requires complex. This is being mainly hierarchical network जो है ना वो Zomato वगैरह almost use करते हैं कि they do according to the region, according to the local area, okay. तो इसमें challenge ये है कि complex route prioritization होता है, and it requires coordination of infrastructure and funding because that local area may be used. तो इसमें वही issue होता है कि it requires coordination of infrastructure and funding. एंड द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल नेटवर्क ये मॉडल है जो कि अब बेसिकली सारे ई कॉमर्स जो कंपनीज है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मैनी मोड ऑफ नेटवर्क्स आर इंटीग्रेटेड, ओके। तो रोड है, रेलवेज है, एयर से, सब कुछ एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, वॉट एवर विल बी रिक्वायर्ड विल बी यूज। तो इसमें ये क्या करते हैं ना कि सीम ये सारे नेटवर्क को सीमलेसली कनेक्ट कर देते हैं। सीमलेसली मीन्स दे यूजिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड दे आर शेयरिंग, एंड all the network are being connected, interconnected, okay। तो इसका बेनिफिट तो यही है कि it enhances choice। अगर आप प्राइम डिलीवरी लेते हो तो आपको क्या होता है कि वो it uses another mode of transportation for your delivery. If you are not choosing the prime, then it uses another mode of transportation, so you have the choice, है ना। And also it promotes efficiency and environment friendly travel, है ना, कि क्योंकि all the modes of transportation are available, है ना। तो मल्टी मॉडल का ये फायदा है। हाउएवर चैलेंजेस ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, है ना। So these are all about the networks. These are all the different types of network that you need to know that the companies are using in the transportation. Okay. Next, this slide is discussing about the what should be considered before you design. So these are the standard types of network that we have discussed: the multimodal, the radical, the ring, hierarchical, and all these. So these are the standard network. However, the companies, what they do is they make up their own network transport model, and they make up their own models, okay. So what should be considered before making their own network design? Sure, the geography should be considered, वो किस area में काम कर रही है, वो किस area में supply करना है ना, किस type के population है, the population density, the economic activity, sustainability and resilience. So all these factors to be considered before designing the network, okay. Next, we discussed that while designing the network, we have to trade off in the transportation design. Trade off मतलब आपको सोचना है कि if you are using air, then you, because you know air transportation is much more costlier than the railways, but you know that it is much more faster than the railways, है ना। तो there is a trade off, एक टाइम है और एक स्पीड है ना। एक स्पीड है, एक कॉस्ट है। तो आप कॉस्ट बढ़ाओगे तो स्पीड से, अगर आप कॉस्ट कम करोगे तो आपको स्पीड से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप स्पीड अप करोगे तो आपका कॉस्ट हाई जाएगा। तो ट्रेड ऑफ तो आपको करना ही होगा। तो इसी डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन करने में जो आप ट्रेड ऑफ करते हो, दैट इज द डिस्कशन मेड हियर, कि इधर यू हैव टू ट्रेड ऑफ इन कॉस्ट और क्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। So all these things are there. We don't have much time, so I'm trying to be faster now. सो क्या क्या पॉइंट्स जो आप ट्रेड ऑफ करते हो, किस किस पॉइंट पे करते हो? पहला हो गया कॉस्ट और क्वालिटी पे, दूसरा हो गया स्पीड और टाइम पे, तीसरा हो गया कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे, है ना। फिर नेक्स्ट हो गया आपका स्पीड और एक्सेसिबिलिटी पे, उसके बाद हो गया प्राइवेट वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
फिर हो गया सस्टेनेबिलिटी पर, फिर एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर. ओके, that's done. फिर नेक्स्ट हो जाता है अर्बन वर्सेस रूरल नीड्स पे. अगर अर्बन सिटीज में आपको करना है तो वहां पे आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो. रूरल में यूज करना है तो डिफरेंट है ना, बिकॉज अर्बन एरियाज दे हैव द गुड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें वहां पे बेहतर होते हैं. तो अर्बन यू कैन यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो वाइल चूजिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आप ट्रेड ऑफ करते हैं ना, वो इसी सारे पॉइंट पे करते हो. ये कॉस्ट बढ़ाऊं या स्पीड बढ़ाऊं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाऊं, या जैसे बल्कि गुड है तो बल्कि गुड है तो आप रोड से भेजकर क्या करोगे, इट इज बेटर टू यूज लाइक कोल एंड ऑल, बेटर टू यूज रेलवेज, क्योंकि वो बहुत बल्कि गुड है. उसमें अगर आप एयरवेज यूज करोगे तो आप फालतू का खर्चा करोगे, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी ट्रेडेड ऑफ एंड कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4. इज इट डन फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right, thank you. Moving to unit 5. I'm right now I'm moving a bit faster, but don't worry, we are here connected till our exam. I have promised you that I'll be connected. I'll be even, so this is the marathon class that I'm taking. Even after this class we'll be connected, and I'll like provide you all the needful that is that can be given to you. Okay, I'll provide you like the PPTs and everything. Okay, so don't worry. Okay, so this is unit number 5. Is it visible or not? No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Hmm. Now I guess it is visible. Yes, ma'am. Okay. So unit number 5 is all about the coordination. You know, the most important thing in supply chain is coordination. There needs to be a proper coordination between the supplier to the wholesaler to the retailer to the customer, to every element or party is involved. If there is if the coordination is not proper, then there may be issues, like there may be overstocking, there may be understocking. Okay, if the customer is not able to properly demand, or if the customer is demanding but the retailer is not able to meet up with the demand, is not able to properly take up the demand, then there may be issues of over understocking. If the retailer is not properly communicating this information to the manufacturer, then the manufacturer may not be producing and there may be understocking. So everything, all the supply chain may be disrupted if there is improper coordination, okay, between all these parties who are involved in the supply chain. Okay, so this improper coordination or this thing is known as bullwhip effect. बुलविप का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब क्या होता है? बैल, है ना. तो आपने देखा होगा कि बैल जो होता है, वो जब उस बैल गाड़ी जो होती है तो उसमें जो बंदा बैठा रहता है वो क्या करता है? व्हाट द मैन डज इज ही हैज अ रोप लाइक थिंग इन हिज हैंड, और उस पर कोड़ा मारता है वो, मतलब ही बीट्स द दिस बुल, है ना. तो वो जो उसको सिग्नल देता है टू मूव फॉरवर्ड is being given by the man sitting at the back, right? So bullwhip भी वही होता है कि like the pressure that he is putting on the rope, वो rope को उठा रहा है और pressure जो डाल रहा है ना, the pressure that he is putting and the pressure that the bull is getting is different. वो प्रेशर जो है ना, वो बहुत ज्यादा, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेवरेज हो जाता है वो प्रेशर, है ना. तो इसी को बुलविप इफेक्ट कहते हैं कि वो थोड़ा सा मूव करता है ना, एंड दैट इफेक्ट इज मल्टीप्लाइड एंड द बुल गेट्स अ ह्यूज इफेक्ट. तो
तो बुलविप इफेक्ट सप्लाई चेन में किस लिए यूज होता है? सप्लाई चेन में भी क्या होता है कि कई बार बुलविप इफेक्ट आ जाता है। बुलविप इफेक्ट का मतलब है कि like for example, I'm just giving you an example. Like for example, customer normally they demand for example they demand 10 kg rice for a month. ठीक है? That customer goes to the retail shop and every month he is like demanding 10 kg rice for a month. Then in a certain month he goes to the retailer and he asks for 20 kg rice, or let it be 15 kg rice. He asks for 15 kg rice. The retailer was having the impression that the customer just need 10 kg rice every month, and accordingly he is maintaining his inventory. The retailer is maintaining his inventory accordingly, that the customer generally he demands 10 kg of rice a month. But the customer goes and he demands for 15 kg of rice, and the retailer he now assumes in his mind that now the customer from the next month onward he will be demand, his normal demand will be 15 kg. His normal demand will be more than what he used to demand regularly. Means पहले 10 kg था, अब जैसे ही कस्टमर ने 15 kg का डिमांड किया, the retailer gets an impression that now the customer's demand for rice has increased. और इस assumption में रिटेलर होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर से 20 kg राइस फॉर दैट कस्टमर लेकर आता है. फॉर दैट कस्टमर नाउ ही आस्क the wholesaler to provide 20 kg of rice, so that अगर कस्टमर, क्योंकि he has the impression that the customer will now be demanding more, तो कस्टमर ने अपना डिमांड कितना इंक्रीज किया? 5 kg. रिटेलर ने अपना डिमांड कितना इंक्रीज कर दिया? 10 kg. क्योंकि रिटेलर को ऐसा लगा कि द कस्टमर में इंक्रीज हिज डिमांड. अच्छा, तो होलसेलर के पास जब 20 kg का डिमांड आया, तो होलसेलर देन गोज टू हिट्स टू द प्रोडक्शन सेंटर एंड आस्क फॉर 40 kg. ठीक है? अपने मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन हाउस पे अपने प्रोडक्शन हाउस पे जाता है एंड देन ही आस्क फॉर 30 kg. लेट दिस बी 30 और 40 kg. ओके, he asked for 40 kg, let it be 40 kg. Okay, so he asked for 40 kg क्योंकि he gets an impression that the retailer now needs more than what he actually demands. Then the wholesaler demands for 40 kg to the production house. Then the production house goes to the manufacturer and it demands 50 kg, as he thinks that the wholesaler if has increased his demand, and thus he may need more from the next month. And thus the manufacturer gets the order for 50 kg, and now the manufacturer thinks that the production house is demanding 50 kg. So in order to like not to miss any production or not to miss any sale, the manufacturer now thinks that I should produce 60 kg, so that in any case manufacturer production house needs, then it can get. So now the manufacturer produces 60 kg. You can just imagine the customer who has increased his demand just by 5 kg, and the manufacturer who is now producing 60 kg instead of 10 kg. You can see just the how the bullwhip effect has increased. How because of the bullwhip the effect has increased so much. ये 5 kg 10 बना, 10 20 बना, 20 40 बना, 40 60 बन गया. So if there is any disturbance in any of the parties' demand, if there is any change in the demand forecast, and if it is not accurately forecasted, then you can just see the bullwhip effect it can create. अब ये कस्टमर जो एंड कस्टमर है वो कितना लेकर जाएगा? आप मैन्युफैक्चरर होके यू कैन थिंक ऑफ एनी क्वांटिटी यू वांट. Like for example, in our case, the manufacturer is now producing 60 kg. ठीक है? But
he is producing 60 kg, but the end consumer will just take 15 kg. तो बाकी क्या होगा? बाकी 45 kg क्या होगा? That will be overstock. That will nothing but the overstock, है ना? तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड कि अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बुलविप इफेक्ट होगा. इज माय क्लास कंफर्टेबल विद दिस टर्म? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So see. Okay, thank you. So see here. So just one second. So see, supply chain coordination. So the management of interconnected business involved in providing goods and services to end customer is known as supply chain coordination. Okay. What is the importance? Its importance is to ensure efficient resource utilization, reduce the cost, and improve the customer satisfaction. This is the whole motto or the importance of having a coordination. Yes. So, what is bullwhip effect? Bullwhip effect is nothing but a phenomena where small fluctuation in demand at the retail level causes progressively larger fluctuation in demand at the wholesale, distributor, manufacturer, and raw material supplier level. Is my class clear with this definition? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. So, what are the causes of bullwhip effect? So what are the causes of the bullwhip effect? The first is demand forecast. The demand forecast updating. So company adjusts their demand forecast based on order received, leading to over or underestimations. उन्हें जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? अपने डिमांड अपने फोरकास्ट को अपडेट कर देते हैं ना, है ना? In our case 15 kg was demand, the retailer thought that the demand may increase, और भी इंक्रीज हो सकता है ना. सो बेस्ड ऑन दिस forecast, demand forecast, on the basis of order received, they have updated their production, and this is the reason of the bullwhip effect or order batching. So companies they place basic. एक और reason हो सकता है bullwhip effect होने का कि कई बार ये होता है कि लाइक द कस्टमर हैज डिमांडेड 15 kg, बट मैन्युफैक्चरर को जब बताया जाता है कि 15 kg इज डिमांडेड, मैन्युफैक्चरर थिंक्स दैट producing just 15 kg will not will be a costly deal, so it is better to produce in a lot, to produce at least 50 kg. तो 15 की जगह 50 बनाता है to reduce its प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि मशीन एक बार चलेगी तो उतना बिजली बिल उतना खर्चा आएगा ही, तो इट द मैन्युफैक्चरर मे थिंक दैट लेट अस मेक 50. तो एक बुलविप इफेक्ट आने का रीजन एक ऑर्डर बैचिंग भी होता है कि बैचेस में ऑर्डर जो है वो बैचेस में बनता है. आप कई बार कई सारे प्रोडक्ट्स को सुनोगे जो कि बैचेस में बनते हैं, जैसे शूज वगैरह, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस. ओके, so because of this also the bullwhip effect may arise. Or price fluctuation. So special discount and promotions cause irregular buying pattern. आप कभी भी देखोगे कि जब तक कोई कंपनी ये अपने एडवर्टीजमेंट इसमें रहता है, एडवर्टीजमेंट पीरियड में रहता है, मतलब अपने प्रमोशन पीरियड में रहता है, तो उस टाइम पे दे गिव एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, दे प्रोवाइड प्रमोशन कोड एंड ऑल दोस. तो उसकी वजह से forecasting of the demand is not very accurate, क्योंकि उस time because of the discount and because of the first come promotion and all these coupon cards and all these, because of those there is irregular buying pattern. तो उस buying pattern को आप observe नहीं कर सकते और उस buying pattern को अपना mean नहीं बना सकते, right? Next is rationing and shortage gaming. ठीक है, anticipation of shortage leads to inflated orders. तो यही अपने केस में यही हुआ था, anticipation of shortage, and because of that inflated order आ रहा था ना. So the causes of bullwhip effect are demand forecasting updating, order batching, price fluctuation, and rationing and shortage. What are the consequences? The consequences first is inefficiency, है ना, excessive inventory हो जाएगा, है ना, excessive inventory हो जाएगा.
increase cost हो जाएगी because higher warehousing has to be maintained, higher transportation, higher production cost. And the last is the poor customer service. Poor customer service means stock out and overstock situation आ जाएगी, leading to customer dissatisfaction, right? So बुलविप इफेक्ट का क्वांटिफिकेशन कैसे कर सकते हो? इट इज बेटर टू यूज टू मेजर द बुलविप इफेक्ट. सो वेरिएंस रेशियो मेथड विच कंपेयर्स द वेरिएंस ऑफ ऑर्डर्स एंड सेल्स, कितना ऑर्डर किया गया था और कितना सेल्स हुआ है, उस वो रेशियो आप निकाल कर जान सकते हो कि व्हाट वाज द वेरिएंस, है ना, कितना डिफरेंस था. द स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच. स्टैंडर्ड डेविएशन मींस एनालाइजिंग द फ्लक्चुएशन इन ऑर्डर साइज. ठीक है, कि अगर 10 था तो उसने डिमांड 15 किया, मतलब उसका ऑर्डर साइज कितना डिफर हो रहा है. या फिर केस स्टडी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. नो, सो हियर आई हैव टेकन सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. केस स्टडी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ बुलविप इफेक्ट. आई विल जस्ट शो यूनिट नंबर 5. So basically, there was one FMCG company. The name is not given here. So it became a culprit of this bullwhip effect once upon a time. So because it analyzed the order variability across its distribution centers, and there was a significant amplification in order compared to the sales data. So they just somehow they just amplified the order, and because of that they have there was the bullwhip effect seen there. And then when it compared to the sales data, it came to know that it was nothing but the bullwhip effect that have occurred there. Okay, so what is the impact of centralized information of the bullwhip effect? So if there is like real time data, there is data analytics used in the supply chain, and the real time data is being shared, and the information is properly shared, then it may reduce the bullwhip effect. Okay, so what are the mitigation strategy? The strategies are to improve the demand forecasting, to have an order synchronization, means there should be order synchronization. That means the retailer should be transparent enough with the wholesaler. The wholesaler should be properly coordinated with the production house and the manufacturer. So there should be proper synchronization and stabilizing price. The price should be stabilized. The promotion and discount wala period का जो price था या जो order था should not be taken up as a mean. Also, the streamlined order processes. The order processes should be streamlined. The lead time should be reduced, so that, like, why they were, like in our case, why the retailer, when he got the order just for 15, why he gave the order for 20? Because उसको लगा कि अभी तो कस्टमर 15 ले जाएगा, लेकिन recent पीरियड में फिर वो डिमांड बढ़ा सकता है ना. तो हो सकता है कि लीड टाइम जो था रिटेलर का वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए he didn't want to take any risk and he asked for 20. And similarly the wholesaler, they asked for 40, because the lead time may be very high, because of which they thought it's better to give a higher order, है ना. तो streamline order process may be one solution to reduce the bullwhip effect. Okay, last is information sharing and incentives. So uh, it is suggested to enhance the transparency among the parties, and also the trust among the supply chain patterns. The trust is one major issue. It should be increased. It should be enhanced, so that all the parties, they properly and transparently share the information. Okay, so that it leads to better facilitation of so that it leads to better decision making and responsiveness. Also, incentive alignment means incentives should be aligned to ensure that the incentives should be aligned, means
uh, there should be a proper coordination, so as to ensure that all the parties they benefit from cooperation. For example, successful information sharing and incentive alignment in supply chains. Okay, so all the parties should be properly coordinated, and they can be given some incentive if they are able to properly coordinate and they are able to properly finish up with the project. Okay, so this is all about chapter number 5 was all about dedicated to the bullwhip effect. It is an important effect that can lead to disruption of the supply chain or lead to high cost to the company if there is not proper coordination made between the parties. Okay, if the class is comfortable, can I move to unit number 6? Yes, ma'am. Okay, मैम thank आई हैव you. डाउट। Yes, please. इसमें जो है इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, तो ये हाँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब इस सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बाकी तो मुझे समझ सेंट्रलाइज्ड में आ गया। इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ना कि इंफॉर्मेशन अगर सेंट्रलाइज्ड हो, लाइक यहाँ पे हमारे एग्जांपल में क्या था कि ये इंफॉर्मेशन कस्टमर रिटेलर को दिया, रिटेलर होलसेलर को दिया, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दिया, तो ऐसा हो रहा था ना। अगर ये इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड होता कि कस्टमर किसी पोर्टल पर जाके इफ इट इज गिविंग इट्स ऑर्डर, तो ये 15 जैसे ही वो पोर्टल पे रियल टाइम डेटा में शेयर होता तो ये सबको पता लग जाता है ना। फिर तो ये बुलविप ये इफेक्ट का वो नहीं आता, इफेक्ट नहीं आता ना। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इंफॉर्मेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड। इट शुड नॉट बी कि रिटेलर होलसेलर को बताएगा, होलसेलर उसको बताएगा। इट शुड बी डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, है ना। ओके। या यूनिट नंबर 6। So chapter number 6 is about the strategic sourcing and supply chain. I already have told you that sourcing is all related to the रॉ मटेरियल सप्लायर, है ना, जहां से आप इट इज सोर्स नॉट। कर रहे हो। नॉट विजिबल, ओके ओके। मैम योर स्क्रीन इज नॉट। हाँ, आई एम शेयरिंग अगेन। Actually, I think whenever I'm switching now, it is like unshared. I need to share again. I guess it is now visible. यस मैम। Okay, so I was just telling that this chapter number 6 is all about strategic sourcing in supply chain management. So strategic sourcing means I've already told you, if you remember in the this quick response strategy and all those things when we were discussing about the risk and uncertainty, I told you that sourcing is related to the raw material supplier. So here in this chapter we'll be just trying to understand ki how can we make a strategic relationship with the sourcing party, with the sourcing supplier, means the supplier who is providing you the raw material, the supplier who is providing you the material. Okay, so how can we have a strategic relationship with that? Okay, so sourcing basically it involves suppliers to provide the goods and services needed for the supply chain. It impacts the cost, quality, delivery, and innovation. Only if you are getting a good raw material, good quality raw material at a good price and delivered at a proper time with some innovation, then only you will be able uh, uh, to produce a good finished goods, or you will be able to deliver good quality product to your customers, है ना। That means sourcing is very important. So the sourcing means all those parties who are involved in supplying the product or the raw material is very important. All those parties are very important because it impacts the cost, quality, and delivery and innovation. So effective sourcing is very necessary, is required.
So effective sourcing, it ensures reliability and competitive advantage only when you have a reliable supplier, and if the supplier is supplying a very good quality at a good price at a proper time within the scheduled given time, then only the company can gain advantage and can have profit. Okay, so there are two decisions that are being made, that is called make or buy decision. You may have read this in your management accounting, cost management, management accounting, yeah. You may have read this in management accounting, where you have to take the decision of make or buy. Okay, so you need to take the decision whether you want to buy the raw material or buy that particular product and just provide the logistic service, or you want to make the raw material in your own organization, have a department where the organization where that raw material will be made. So you want to make the decision whether to make or buy. Okay, so what we'll be doing for the first is we'll be doing the cost analysis. Cost analysis means we'll be comparing the cost कि अगर 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 इन हाउस बिल्ड किया जाए, खुद से बनाए तो सस्ता पड़ेगा, या सिर्फ असेंबली करें और बेच दें तो सस्ता पड़ेगा. तो कॉस्ट एनालिसिस इज बीइंग डन. फिर कोर कॉम्पिटेंसी, आपको ये भी देखना होगा कि क्या जो आप बनाने जा रहे हो उस पे आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है. लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव डिस्कस द केस स्टडी ऑफ एप्पल. We have discussed that Apple, it never ever shares its designing with the external party. It never gives its designing work to the outsourcing. It only gives the this BPO, this assembling service to the outsource companies. Okay, so that means you have to analyze if your core competency is that particular product, then it should be in house made, है ना. तो आपको ये अगर समझना है कि आप इस चीज को बनाओ या इस चीज को खरीदो. जैसे कभी कभी होता है ना, जब बहुत मेहमान या कुछ कभी ऐसे घर पर भी होता है, कभी कभी आपको लगता है यू टेक द डिसीजन ऑफ बाय और मेक, है ना, कि आप घर पर बनाओ या बाहर से ऑर्डर कर लो. तो आप क्या करते हो, आप पहला प्राइस देखते हो, कॉस्टिंग देखते हो कि कॉस्ट आपको सस्ता पड़ रहा है महंगा पड़ रहा है. फिर उसके बाद उसको बनाने में जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए या जो वो चाहिए वो देखते हो. फिर आप देखते हो इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी, आप बना पाओगे कि नहीं, जैसा वो एग्जैक्टली दिख रहा है वैसा आपसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा, है ना. आपकी कैपेसिटी है नहीं है, उसमें रिस्क क्या है ना. तो सिमिलरली हियर आल्सो व्हाइल प्रोड्यूसिंग द व्हाइल लाइक वाइल टेकिंग द डिसीजन कि आपको उसको इन हाउस बनाना है या उस प्रोडक्ट को आउटसोर्सिंग करना है, किसी बाहर के सप्लायर से लेना है, तो आपको देखना चाहिए, उसकी कॉस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालाइज करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप उसको बनाने बैठो तो आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है वही खत्म हो जाए एंड योर होल फोकस गोज ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना. अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग हो सकता है तो लेट दैट बी आउटसोर्स्ड, है ना, ताकि आपका मेन जो है वो कम से कम क्या हो कि उस पर कम से कम आपका फोकस बना रहे, राइट. तो देन इज कैपेसिटी, क्या आपकी इंटरनल कैपेसिटी है या उसके लिए आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से आपको रिसोर्स पर्सन बुलाने पड़ेंगे, है ना. तो इसको चेक करो, रिस्क चेक करो कि दोनों ऑप्शन में क्या रिस्क अवेलेबल है. अगर मैं अपना मेन डिजाइनिंग जो मेरा मेन है जिसकी वजह से मेरा फॉर्मूला है, क्या मैं उसको और किसी से शेयर कर दूं तो उसको शेयर करने में क्या रिस्क है, या फिर नहीं शेयर करूं तो क्या रिस्क है ना. तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी एंड रिस्क. तो इन डिटरमाइनिंग द मेक और बाय डिसीजन, ठीक है. तो इन हाउस करना है या आउट हाउस करना है, इसके लिए आपको डिसीजन लेना चाहिए और किस किस पॉइंट्स पर बेस करना चाहिए इज द कॉस्ट एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी और रिस्क, राइट. Next is supplier scoring and assessment. Then what you can do is you can just evaluate the supplier. I have already told that evaluating the supplier is very important. So supplier evaluation आपको करना है to check up his ability to meet the company's need, है ना. You want to check up his ability whether he will be able to meet up with the company needs. तो क्या क्या criteria check करना. The first criteria is the quality, what quality he is providing, what is the cost, at what cost he is providing, what is his delivery schedule, how reliable he is. You will just see the history कि ये कितने बार आपको सही टाइम पे प्रोड्यूस, कितने बार ये सही टाइम पर डिलीवरी दिया है, and its innovation, है ना, whether he is able to innovate or not.
whether he is able to put some innovation in the product or not. Okay, फिर what is the, so criteria आप check करोगे, right? ठीक है, then what is the method he is using? Okay, then you can just check with the methods. जैसे कुछ method होता है audit, जैसे आप क्या करोगे, audit में क्या होता है कि everything is being properly matched with the document and everything. तो आप जब supplier को evaluate कर रहे हो, you know ना, as a supply chain manager, your main or your one of the main important thing you can say is to evaluate the supplier, because if you select a wrong supplier, then the whole supply chain may be disrupted. So what are the method you can do to evaluate the supplier? You can use scorecards. आप स्कोर बना लो कि अगर ये टाइम से सप्लाई करता है तो इसको 10 देते हैं, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसको 12 देते हैं, ऐसे करके आप स्कोर कार्ड बना के कंपेयर कर लो 10 ये क्या बोलते हैं सप्लायर्स को, या फिर आप उनकी ऑडिट कर लो, है ना, या फिर आप परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लो। तो आप किसी भी मेथड्स को लगाकर आप अपने सप्लायर को चूज कर सकते हो, ठीक है। Then there is one case study I've used, an Indian electronics company. It used basically a detailed scorecard to assess the supplier performance, focusing on the quality and delivery reliability. Okay. Then supply contracts and supply chain performance. तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर द सप्लाई द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इन द क्लास आई हैव टोल्ड यू। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वो होता है जिसमें आप you put on every detail related to the contract you are making, related to the supplier, related to the terms in case the supplier is not able to meet up with your order. Okay, so all the terms and condition related to the buyer supplier relationship is being included in the supply contract. तो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस भी होता है जिसमें आप कोई प्राइस बता देते हो, द प्राइस विल बी फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस, ये भी होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्लस वॉट एवर टैक्स, या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है ना। तो इस तरह के ढेर सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। Okay, what is the impact on performance? Impact ये होता है contract influences. Contract, yes, it influences the cost efficiency, the quality standard, the delivery time. So everything is being maintained there कि performance पे मतलब basically on the performance this is being evaluated. Okay, so everything is mentioned there. So this chapter number 6 is all dedicated to the supply this सोर्सिंग ऑफ द सप्लाई चेन। तो सोर्स जो आपको करना है, मीन सप्लायर जो चूज करना है वो इन हाउस करना है, आउटसोर्सिंग करना है, वो सप्लायर चूज करते टाइम आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, हाउ द सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ऑल दिस this chapter is all about that only. Okay, any question? No, ma'am. No questions, or you are tired? So chapter 7, see, chapter 7 is big data analytics. If you remember, I have already told you in the class that chapter 7 I'll not be repeating, because chapter 7 has already been taken up in the supply chain analytics in detail, because this is nothing but but is a chapter, a topic of the supply chain analytics only. Here in this chapter, they have just introduced what is the role of data analytics in supply chain, what is the role of big data analytics in supply chain. Okay, so you know that big data analytics is nothing but it is using the okay, the screen may not be shared, no? Yes, ma'am. Yeah, so I've shared the screen. It is visible, right? Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay, so see, chapter 7 I've already told you it is part of the this one supply chain analytics। ये supply chain analytics का पार्ट है जिसमें बिग डेटा का सिर्फ डेफिनेशन आपको जानना है। बिग डेटा का मतलब क्या है, सारे जितने दुनिया भर के डेटा और इंफॉर्मेशन आपके सप्लाई चेन से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपके सप्लायर से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन जो एक साथ ही इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है उसी को तो कहते हैं बिग डेटा। लेकिन इस डेटा को एनालाइज करना जरूरी है सो दैट यू कैन गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, so big data analytics, it involves analyzing the large volume of data to extract the meaningful insights and make informed decision। ठीक है, तो इन सारे इंफॉर्मेशन से आपको informed decision बनाना है, उसी को तो कहते हैं big data
एनालिटिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स, आप एनालिटिक्स अगर यूज करोगे, डेटा यूज करोगे, तभी आपका सप्लाई चेन जो है वो ज्यादा बेटर होगा, आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगी, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और आप इनोवेशन कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेलिवेंट टूल्स फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। व्हाट आर द टूल्स, मैंने बताया हुआ है काफी सारा टूल्स है, जैसे हैंडलूप है, हेडूप है, सॉरी, हेडूप है, ये क्या है, आपके स्टोरेज एंड ऑल से रिलेटेड रहता है, वन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। टेबुला हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब बार्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह बनाकर आपको देता है, ठीक है। पाइथन एंड आर जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सप्लाई चेन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे सैप हो गया, ऑरेकल हो गया, एससीएम क्लाउड हो गया, आईबीएम वर्सन हो गया, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपके सप्लाई चेन को मतलब बेसिकली मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हो गया, तो ये दिस इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, ऑल दो दिस इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन एनालिटिक्स ओनली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। गुड टू गो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, reverse logistics in manufacturing organizations and e-commerce firms. So this is unit number 8. So if you remember, we have discussed the reverse logistic, the meaning of reverse logistic in our supply chain analytics class. Ma'am, please share the screen. Oh, sorry. Every time I'm switching and the screen is unshared. Okay, I've shared again. So our class is still 4, no? Yes. Yes, ma'am. Okay. And you must be tired also. सुन सुनकर पक गए Yes. होगे Yes, आप लोग? ma'am. No, ma'am. अच्छा, पक्के नहीं हो? वेरी गुड। ठीक है, तो वी आर नॉट लेफ्ट विथ मच, ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 तो बहुत छोटा सा है, जिसमें आपको यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। चैलेंजेस सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट कवरिंग इन ऑल ऑफ द चैप्टर्स, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, this one, chapter number 8 also, it is reverse logistic that we have covered in our this one, supply chain analytics. I'll just go through this in 5 minutes. If we are able to complete, and if basically if you are able to understand within the given 5 minutes, then it's okay. If not, then we can just take up in the next class, no problem. Okay, we have this marathon class for the supply chain analytics as well, no? So we can take up there. Okay, so I think I'll Ma'am, not this pick up. topic is also there, so we can like go through there only. That is what I'm telling, because the this reverse logistic, this is covering the just the basic of the of what we have to cover in supply chain analytics, and this already we have the basic of supply reverse logistic we have already completed in this analytics, so no worries. And even this chapter number 8 from the supply chain management also, I'll be revisiting there with you in the supply chain analytics class. So right now I'm stopping here. Just let me know if there is any question or issue, or if you have not understood anything. Ma'am, could you please share your number so that we can create a WhatsApp group Yeah, where you sure. can. Sure. Please take up my number. We have some, this one, chat box. Yes, ma'am. मैं मैसेज कर पाऊंगी उसमें, चैट बॉक्स में? कहाँ है, वेयर इज इट? Not getting.
I'm not getting the chat box. You click on the three dot, then there is an option of More chat. meeting information, video, audio. I'm not getting it actually. I just have these options: meeting information, video effects and settings, audio settings, language And settings. the three dots near the end call option, you click that. There's a option near people chat. The chat box will be opened. Near the leave, I have this share option, mic option, camera option. And if you talk about the three dots, I have this settings where I have zoom and give feedback. There is an option there of chat. If you will be able to access that. I think I don't have access because I'm not getting any such option. Ma'am, you can share your mail. Yeah, sure. It's SONI SONI MITALI MITALI. Sony Mitali 77 @gmail.com. So, ma'am, you will Okay, be ma'am. sharing these PPTs in the group itself or individual? Like how will See, be? what I'll first share this PPTs with the admin. Okay. Then I requested you to make a WhatsApp group so that you can connected. If you have any issue with the chapters or anything, then you can just ask me before the exam. I don't know whether this will be live streamed to the YouTube. That's why I'm not telling my number here. But if it is not live streamed, then I can just tell you my number. Or what you can do is just drop a mail. I'll share my number. One of you please responsibly do this. Take my number, make a WhatsApp group, and we can have like if you want to ask anything after the classes also, you can just be connected with me there. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Other than this, yeah, PPTs I will be sharing with the admin, but still, if you make the group, then I'll be sharing in the group also. And yes, I had been planning to like discuss with you some case studies and MCQs also. If we get time, we'll do that also. Okay. So till now, this is the official like the last class for this paper. So I wish you very best for the exams for your future. And it was a very good journey teaching you. You all are very bright student. I really feel blessed that I get an opportunity to teach you all, to share my knowledge whatever I have with this paper. So and I guess that we'll be connected in future as well. If we get any time to meet, we'll be meeting again. Okay. So wish you very best, perform very well in the paper. Think that this is the last thing you have. This is the last certificate you will be getting for your life, and you have to carry it for the lifetime. Put all your energies, put everything to get the best of the best marks you can get, because this you have to carry till your like for your career, whole of the career you have to carry this certificate. I have put all my efforts and I'll be there with you till your exams. So you too have to put all your efforts, and I have told you, don't compromise with even a single marks. Try getting that and do the best in your life, whatever you can do. Okay. So Thank you, thank you ma'am. so Thank you, much. ma'am. Thank you. Thank you so much. Wish you all the best. So thank you. Can we leave? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Who is gonna mail ma'am? शिवांगी और जूही कौन मेल करके ग्रुप बना सकता है? हाँ, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना उनका मेल आईडी, आपने अगर लिखा है तो। मैंने ठीक लिखा है। है। कौन करेगा? एक ही जना कर लो, कोई भी। वॉइस ब्रेक हो रही है। जूही, विल यू?
Okay, I will. Okay, thank you.